वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का आज के डिस्कशन में स्वागत है। आज हम लोग जो है रबर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। रबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जिसका कई फील्ड में एप्लीकेशन होता है। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल टू हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, हर जगह हम लोग जो है रबर का इस्तेमाल करते हैं। इवन मेडिकल इंडस्ट्री में भी रबर का बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के डिस्कशन में हम लोग रबर को समझने की कोशिश करते हैं और इसके टाइप्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज रबर। तो बेसिकली रबर इज अ नेचुरल नेचुरल पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, यूजुअली सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। रबर इज ऑल्सो नोन एज इलास्टोमर्स। तो रबर को इलास्टोमर्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होते हैं। It can be defined as a sticky, elastic, solid material that has plasticity, produced from a milky liquid known as latex, natural rubber. नेचुरल रबर जो है वो एक मिल्की लिक्विड जो कि प्लांट से कलेक्ट होता है, उससे प्रोड्यूस किया जाता है, उसको लेटेक्स कहा जाता है। और जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रबर होता है उसको हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। तो बेसिकली एक ये रफ डेफिनेशन है आपकी रबर की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रबर। तो बेस्ड ऑन दी ओरिजिन कि ये आता कहाँ से है, जो रबर है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल रबर और दूसरा है सिंथेटिक रबर। तो ये नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर जो है ये नेचर से कलेक्ट किया जाता है, प्लांट से, लेटेक्स के फॉर्म में। बेसिकली लेटेक्स एक जो आपका प्लांट से ड्रिप होता है मिल्की कंपाउंड, उसको कट करके और प्लांट के बार्क पे कट करके उसको कलेक्ट किया जाता है। व्हेन इट इज कोगुलेटेड बाय अ वीक एसिटिक एसिड, और इसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव कर दी जाती हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। इट इज पास थ्रू द रोलर्स टू क्रीप द रबर। रोलर से पास करके इसको क्रीप करते हैं एंड देन इट इज फर्दर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस द कमर्शियल फॉर्म ऑफ रबर। तो इस तरह से नेचुरल रबर को, मिल्की कंपाउंड को कलेक्ट करके, कोगुलेट करके, प्रोसेस करके हम फाइनली कमर्शियल रबर तैयार करते हैं। सिंथेटिक रबर क्या है? एक जनरल पर्पस रबर है। जनरली स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर इसको कहा जाता है, SBR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये एक स्पेशल पर्पस सिंथेटिक रबर होता है और इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक रबर में होनी चाहिए। इट हैज़ स्पेशल क्वालिटीज टू सूट डिफरेंट पर्पसेस। और सिंथेटिक रबर को हम अपने यूज़ के हिसाब से उसमें उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज नियोप्रीन। फिर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रबर। एक रबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। सेकंड इज नॉट ट्रांसपेरेंट। थर्ड इज वाटर प्रूफ और वाटर रिपेलेंट। फोर्थ इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ is it insulates electricity. Sixth is acid and alkaline resistant. And seventh is does not conduct heat. हीट का ये कंडक्टर नहीं होता है। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रबर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रबर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रबर। तो जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रबर है दैट इट इज नॉन रिएक्टिव। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है केमिकली रेजिस्टेंट टू मेनी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग मेनी वाटर, वीक एसिड्स एंड अल्कलीज। थर्ड इज नॉन कंडक्टिव। फोर्थ इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन fifth one is elastic. Sixth property is it is tough. Seventh property is it is electrical resistant. And last property is that it is uh, electric insulator. तो ये रबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है। फिर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रबर की। तो सबसे पहले इट इज अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स fitted together in loosed chains consisting long chains of one or more type of molecules, that is chemical property. It contains long chains of hydrogen and carbon molecules, यानी कि जो रबर होता है इसमें it has long chain of hydrogen and carbon molecules. Rubber go through vulcanization through adding sulfur or
which results जो है in hardening of the rubber. It is a durable material with great mechanical properties. रबर में इन ऑर्डर टू क्रिएट अ केमिकल लिंक बिटवीन द चेन्स, ये जो है कार्बन का कंपाउंड है, तो कार्बन क्या करता है, लंबी लंबी चेन्स बनाता है. सो द बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड इट मेक्स इट केमिकली लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स. फिर हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रबर की. तो सबसे पहला सस्टेनेबिलिटी. रबर हैज़ मेनी यूजेस दैट मेक्स रबर and recycled rubber product valuable sustainable material. That is, rubber can be recycled, so it is a sustainable material. Rubber is being used as a repairing material in United States to pave the roads and bridges. Surface of roads are upgraded with ground rubber material. Playground with rubber flooring are made, which is safe and has its own aesthetic value. Rubbers are also used and repurposed for protective gear. Rubber create fibers for clothing and outerwear, and rubber has lower the budget of construction industry. यानी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ पे रबर का इस्तेमाल करने से कॉस्ट, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसको लोअर किया गया है. फिर हम लोग बात करते हैं रबर एज अ ग्रीन मटेरियल और इको फ्रेंडली मटेरियल. तो रबर इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली विच इज डेफिनेटली ग्रीन मटेरियल. As rubber recycling has become more common, so it has found more wide application, and it does not go waste. There is market demand which keeps vast amount of rubber out of landfills. तो मार्केट में रबड़ की इतनी डिमांड है कि जो एंड प्रोडक्ट है रबड़ का, वो कभी भी लैंडफिल में नहीं जाता, उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ रबर जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ रबर की बात करते हैं. तो रिक्लेमिंग एंड रिसाइकलिंग रबर यूजेस लेस एनर्जी देन making the new rubber. So recycling is very popular. Recycling rubber reduces the demand for new natural rubber, which may keep rubber tree plantations from expanding into sensitive tropical ecosystem. Keeping rubber out of landfill protects environment as well as human health. Tire fires in landfills will cause pollution and pose a significant safety hazard. So that's why these tires are generally mostly recycled. So the environmental damage is also restricted and protected to certain extent. Then discussing about the aesthetic value of the rubber, uh, can be obtained in different types of color. That is, rubber can be obtained in different type of color. It has a great eye appeal. It is easy to shape, hence allow designers to create seamless installations. More safety, it has safety, it is comfortable and hygienic, and it can also be engineered with antimicrobial properties. तो रबर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द मेडिकल ग्लव्स एंड अदर आइटम्स इन मेडिकल इंडस्ट्री. Now let us discuss about the durability of rubber. So first thing is vulcanization. What is vulcanization? So basically, vulcanization is a process of forming the cross link between polymer chains in the rubber. So what is the benefit of vulcanization? The formation of the cross link chains make the rubber more durable. So it is less sticky and more durable. What are the applications of the vulcanized rubber? So, vulcanized rubber find application in tires, shoe soles, hoses, conveyor belts, and hockey pucks. Then, hard vulcanized rubber finds application in bowling balls, saxophones, mouthpieces. It can be called ebonite and vulcanite. Natural rubber can be compressed and stressed. It is non-reactive to acid and alkali, and it is a great heat and electrical insulator. So these are some of the applications where rubber finds its place after vulcanization. Now let us discuss about the advantages of the rubber. So
First advantage, basically, there are six advantages listed here. First is durability, second is environment friendly, third is water resistant, fourth is it is soft, fifth is it is fire and burn resistant, and sixth is it is sound absorber. So now let us take one by one. First is durability. So rubber is very durable. It is strong and resilient against variety of atmospheric conditions, acids and bases. It can last longer if proper care is taken. It has a long life. So this is about durability of the rubber. Now discussing the environmental friendly property of the rubber. So it is recyclable and it is a better choice since it consumes less energy during the recycling process. So it is environment friendly and moreover the basic raw material for manufacturing is obtained from nature. It is water resistant, so non-porous and does not contain the water within itself. It is soft to touch. Uh, it relieves stress, fatigue associated with standing or walking for long periods, and it can be used as a safety material for manufacturing various items for children's. It is fire and burn resistant, so it resists burns. It is not toxic and will not release noxious fumes into the air when there is a fire occurrence. It is a sound absorber. It dampens the sound. So depending on the type of the machinery, various thickness of rubber pads are used as sound absorbers to reduce the noise pollution in buildings and surroundings. So these are the some of the advantages of using the rubber. Now let us discuss the disadvantages of the rubber. So there are four disadvantages. First is expensive. Second is odor. Third is high maintenance, and fourth is staining. So expensive because rubber is a natural material produced from trees. So there is a limit of what can be obtained from the nature. So it has high initial cost. That is, recycling rubber is cheaper, but manufacturing the rubber for the first time has high initial cost. Second is odor. It has very distinct odor that isn't pleasing to everyone and will dissipate in some time. So the rubber gives a definite odor which is unpleasing, and but it disappears during the course of time. Then high maintenance, drift builds up easily, dirt builds up easily on the rubber, that is dust sticks on the rubber, and it should be properly cleaned at regular intervals. Otherwise, uh, rubber will be damaged. So there is a need for high maintenance and staining. Although rubber is resistant to most of the staining agents, but still there are some agents which uh, causes staining. Detergent and other abrasive cleaning liquids decolor the surface of the rubber. Grease will have a drastic negative effect on the rubber if it is not wiped up or cleaned as soon as it sticks to the surface. So these are some of the disadvantages of the rubber. Now talking about the application of rubber. So in building industry, rubber is most widely used uh, as a flooring material. It is used for making the floors. Used to large extent in public and industrial buildings because of their good wearing qualities, resilience to various chemicals, and noise or sound insulation. So because of these properties, they find application on the floor. Made up of pure rubber mixed with fillers such as cotton fiber, granuled cork, or asbestos fiber, and desired coloring pigment, they give attractive appearance to the floor. Manufactured in the form of sheets or tiles in a variety of patterns and colors. Generally, for the purpose of the flooring, rubber is manufactured in the form of sheets and tiles, and they have various patterns and colors to give a attractive appearance to the floor. So, in this photograph, you can see various applications where rubber is put to use.
राइट फ्रॉम स्टार्टिंग जो है, इट इज़ फ्रॉम मेकिंग ऑफ द जिम टू अ model house to a furniture to a playground floor. So there is a very wide application of the rubber in the industry. Now let us discuss the uh, property of the rubber, how rubber is suitable for making the adhesive. So most all rubber based glues and bonding agents are made of rubber mixed with other compounds suited as a bonding element because of its flexibility. Some type of bonding compounds made with rubber are used as sealants. So this rubber also is also used as sealants. However, rubber adhesive is extremely flammable. It is not suitable for bonding in high temperature situations. It is generally used where dampness is an issue because of its water resistant property. It might be damaged by other solvents such as oil, grease, and not suitable for bonding heavy pieces. So these are some of the uses of rubber as adhesives. You can see here uh, in this photograph, rubber is used as sealing agent and adhesive to stick the surfaces. Now coming to the next property, that is bearing pads. So hard rubber or flexible rubber both are used depending on the type of application for bearing pads. It is used extensively in standard construction application, buildings and structural steel bearings applications. Synthetic fibers are added to the base rubber compound to create an internal stiffening like steel reinforced concrete. This mesh structure delivers enhanced tensile and compressive strength, stiffness, tear resistant and durability. So this is very suitable for making the bearing pads. Rubber bearing pads has been used in bridge bearing masonry pads, handrail bearing pads, pads between steel beams, girders, grates and columns, pad between bridge and roof beams and substructures, shock and vibration isolation, heavy equipment mounting pads, railway type pad applications, pad underneath concrete bolts. So these are the some of the places where the rubber bearing pads are widely used. Moreover, rubber finds its place in expansion joints of the buildings also. A mild structure separation, which designed to relieve stress on building materials caused by building movement. This is this building movement is the result of thermal expansion and contraction caused by change in the temperature, sway caused by winds and seismic events. It marks a gap through all building assemblies, including wall, floor, decks, planters, plazas, etc., because the joint bisects the entire structure. It is used to bridge the and restore the building assembly functions while being able to accommodate the expected movements. So, these are the some of the application of the rubber in expansion joints. So you can see this, some of the bearing pads, filling agents. Uh, these are the some of the rubber products which are widely used in various industries. These are the grips which are used for sealing purpose, that is rubber gaskets. So a wide range of product can be made from rubber for building construction industry. So now concluding this discussion on the rubber, uh, both natural and synthetic rubber are widely used in construction industry. Not only in construction industry, they are used in household and industrial projects also. Many products used in household as a household item and industry are manufactured from rubber. Therefore, rubber industry have a bright future, and rubber finds a wide range of applications. तो ये बात हो गई रबर की। तो आज हम लोग ने रबर के बारे में मतलब व्हाट इज रबर, types of rubber that are based on the source from where it is obtained, that is natural rubber and synthetic rubber, रबर की प्रॉपर्टीज, रबर के कुछ जो है एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, इसको डिस्कस किया। तो दोस्तों, आज रबर टॉपिक पे अपना डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा।
हमारे इस वीडियो को आप जो है शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और लेटेस्ट वीडियोस जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड पाने के लिए, जानकारी लेने के लिए आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।